Hello friends, today in this lecture we are going to discuss about value of taxable supply. So how to find out the value of any taxable supply so that we can levy GST on it. कोई भी प्रोडक्ट पे जीएसटी सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो उसको चार्ज करने के लिए या लेवी करने के लिए हमें उसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। तो वैल्यू किस तरह से फाइंड होता है वो आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी इज गिवन बाय सेक्शन 9। सेक्शन 9 में बेसिस ऑफ चार्ज दिया गया है किस तरह से कैलकुलेट करने का। As per section 9, GST shall be levied on the value of taxable supply of goods or services determined under section 15। इस सेक्शन 15 में जो वैल्यू आया है वही उसका वैल्यू माना जाता है और सेक्शन 15 में उसका कैलकुलेशन करने का तरीका बताया गया है। सेक्शन 15 prescribes the parameter for arriving at value of taxable supply of goods or services, which is normally transaction value. So there are certain parameters which are given to arrive the value of goods or services and which is normally transaction value. In certain situation, however, transaction value is not considered for determination of GST liability, and in such cases taxable value is determined under chapter 4 of CGST rules. Now next point, when value of supply shall be the transaction value. Transaction value is the price actually paid or payable for the supply of goods or services or both. एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपने यहाँ पे। If you have purchased furniture of ₹5,000 and you are paying money in return of furniture, so transaction value is 5,000. That means whatever amount you have paid or you are going to pay, that is become its transaction value. Section 15 subsection 1 provides that the value of supply of goods or services or both shall be transaction value, and value of supply shall be transaction value. What is transaction value? Transaction value means at what price supplier has supplied goods or services or both to the recipient. That will become the transaction value. Transaction value would be acceptable only when the following two conditions are satisfied. First one, where the supplier and the recipient of the supply are not a related person, दोनों related person नहीं होने चाहिए, and the second one, the price is sole consideration for supply, means आपने प्राइस ही सोल कंसिडरेशन है, उसके बदले में और कुछ गुड्स या सर्विसेज कुछ भी नहीं दिया। उसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज आपने एक नया फोन परचेज किया वर्थ ₹20,000 along with the exchange of an old phone, and if the price of the new phone without exchange is 24,000, you have purchased phone at ₹20,000 but with exchange, but without exchange price of the phone is 24,000. So now what is the real value of the phone? So that is open market value, and open market value is 24,000. So GST will be levied on 24,000, not on 20,000. Second example, say for example आपने 40,000 का लैपटॉप बेचा और 5,000 का बदले में रेसिपिएंट ने प्रिंटर भी दिया एंड आपने उसके पास से 40,000 भी लिया। दैट मीन्स इन दिस केस प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। सो व्हाट इज द टोटल प्राइस? 40,000 ऑफ लैपटॉप एंड 5,000 फॉर printer. So that is why total transaction value is 45,000. When these two conditions are satisfied, transaction value is taken as a taxable value of supply of goods and services for calculation of GST liability. Now next point, for determination of transaction value, one should know the inclusions and exclusions to be made in transaction value. What are the things that is to be added while calculating transaction value as per section 15 subsection 1, and what are the values that is to be excluded while calculating transaction value. So first of all, we will start from the inclusion in the transaction value. Taxes. Any taxes, duties, cess, fees and charges levied under any statute will be added. Any type of tax will be added. However, taxes levied under CGST Act, SGST Act, UTGST Act and the Goods and Service Tax Act shall not be added if the tax are charged separately by the supplier to the recipient. जबकि आपको CGST, SGST, UTGST एंड GST कंपनसेशन सेस में जितना भी टैक्सेस लगा है, चार्ज हुआ है, वो सारा टैक्स ऐड नहीं होता बिकॉज वो सेपरेटली चार्ज किया जाता है। देन सप्लायर्स ऑब्लिगेशन मेड बाय द रेसिपिएंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है
कि सप्लायर का ऑब्लिगेशन है बट मेड बाय द रिसिपिएंट, तो उसको भी ऐड करने का। any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply but which has been incurred by the recipient of supply and not included in the price actually paid or payable for the goods and services। ऐसा कोई प्राइस जो एक्चुअल में ऑब्लिगेशन था सप्लायर का बट दैट ऑब्लिगेशन इज मेड बाय द रिसिपिएंट एंड if it is not included into the price charged by the supplier then it should be added। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सप्लायर ने कोई आर्टिकल बनाया, अब उसको पैकिंग ने उसने अपनी तरफ से कोई पैकिंग कर दिया बट रेसिपिएंट ऐसा चाहता है कि उस पर एक वुडन बॉक्स पैकिंग भी हो और उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस है वो बेयर करता है। सप्लायर का पैकिंग एक्सपेंस हुआ है वो तो उसमें ऐड करने का ही, बट जो रेसिपिएंट ने एक्स्ट्रा का पैकिंग करवाया है उसका जो एक्सपेंस हुआ है वो भी उसकी प्राइस में ऐड करने का और फिर जो टोटल वैल्यू आता है उस पर आपको जीएसटी चार्ज करने का। incidental expenses such as commission and packing charged by the supplier to the recipient of a supply, including any amount charged for anything done by the supplier in respect of the supply of goods and services at the time or before delivery of the goods and services। यहाँ पे एक गोल्डन रूल याद रखो, गुड्स का जब डिलीवरी होता है या सर्विसेज का जो भी आप प्रोवाइड करते हो उससे पहले जो भी पैकिंग एक्सपेंसेस हुआ है, जो भी एक्सपेंसेस चार्ज हुआ है, वो सारा का सारा आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हो तब उसमें ऐड करने का। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, all the expenses like commission, packing charges, any other expenses which are made or which are done by the supplier before the delivery of the goods, before the provision of service, that all those incidental expenses will be added into the transaction value and GST will be charged on it। Now next point is interest or late fee or penalty for delayed payment of any consideration for supply। कोई कंसिडरेशन आपने टाइम पे नहीं किया या कोई टैक्सेस पे नहीं किया टाइम पे और उसकी वजह से पेनल्टी हुई, एनी इंटरेस्ट और एनी पेनल्टी और एनी लेट फीस और डिलेड पेमेंट, पेमेंट आपने डिले किया उसकी वजह से इंटरेस्ट चार्ज हुआ, उसकी वजह से लेट फी चार्ज हुई, उसकी वजह से पेनल्टी चार्ज हुई, तो वो सारा का सारा ऐड होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में। Subsidy directly linked to the price, excluding subsidies provided by the central and state government। That means what? If you receive any subsidy from the central government as well as state government, then it is not to be considered. But if subsidy is directly linked to the price, then it will be considered। Now what is subsidy directly linked to the price? That means if any subsidy received by you and if it affects your supply, if it affects your price, then it will be considered। जैसे उससे कोई प्राइस कम होगा या ज़्यादा होगा, आपकी प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है, आपकी सप्लाई पे जो इफेक्ट पड़ता है, तो वो सब्सिडी आपको कंसिडर करना है। जैसे आपको ऐसा कोई सब्सिडी मिला, जैसे आपके फादर ने आपको सब्सिडी दे दिया और वो आपके सप्लाई से रिलेटेड ही नहीं था, तो फिर उसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर ऐसा कोई सब्सिडी मिला जो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट से भी नहीं है, बट वो आपके सप्लाई से रिलेटेड था, तो फिर आपको उसको कंसिडर करना है। तो these are the point that you have to keep in mind। taxes, suppliers obligation made by recipient, incidental expenses before the delivery of the goods or before the provision of service, any interest, any late fees, any penalty charge due to not paying amount in time, subsidy which are directly linked with the price but excluding subsidy provided by central government and state government। So these are the inclusions। To understand this, let us take one example so that your concept gets clear। On July 5, 2018, Z of Chennai supplies 25 tons of chemical to B of Madurai at a rate of rupees 80,000 per ton। Beside, he charged the following: freight 3,12,000, packing charge is 72,000, weighing charge is 30,000, inspection charge is 12,000, cost of an instrument which is specially purchased by Z to manufacture this chemical is 1,10,000। This instrument cannot be used for other purpose। Inspection charges are directly borne by B and not included into the invoice। यहाँ पे
बहुत सारा एक्सपेंसेस दिया, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एक्सपेंस ऐड होगा। जैसे लेट अस टेक फ्रेट 3,12,000, वेदर इट विल बी एडेड, यस। पैकिंग चार्जेस 72,000 एडेड बिकॉज इट इज इन्सिडेंटल एक्सपेंसेस। वेइंग चार्जेस ऑफ कोर्स इट इज एडेड। इंस्पेक्शन चार्जेस 12,000। अब यहाँ पे इंस्पेक्शन चार्जेस के लिए एक लाइन लिखा है, इंस्पेक्शन चार्जेस आर डायरेक्टली बोर्न बाय बी एंड नॉट इंक्लूडेड इन द इनवॉइस। दैट मीन्स व्हाट, ये पॉइंट इससे रिलेटेड है, सप्लायर्स ऑब्लिगेशन मेड बाय द रेसिपिएंट। ये इंस्पेक्शन चार्जेस है, किसको बेयर करना था, सप्लायर को, बट इट इज बेयर्ड बाय बी, बट दैट इज अ रेसिपिएंट। सो वेदर इट विल बी एडेड, so obviously it will be added. So inspection charges of rupees 12,000 is what, it is a supplier's obligation made by recipient, that will be added. Then cost of instrument which is specially purchased by Z to manufacture this chemical is 1,10,000, यानी 1,10,000 का एक इंस्ट्रूमेंट परचेस किया है और यहाँ पे क्लियर इंफॉर्मेशन दिया है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज होगा और कोई पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। State government has paid a subsidy of rupees 40 lakh to Z to set up a chemical manufacturing plant in Chennai. This subsidy was paid in 2017-18. Now question arises whether this subsidy of 40,000 will be added. सब्सिडी कब ऐड होता है, व्हेन सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। यहाँ पे सब्सिडी कब ऐड नहीं होता, व्हेन एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में किसने प्रोवाइड किया है सब्सिडी, स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड, सो दैट it will not be added into the transaction value as per section 15 subsection 1. Now next point, be required to make payment within 15 days of supply. However, the payment is made in October 2018 and for the late payment Z charges interest of rupees 11,000. अब यहाँ पे Z charges interest because पेमेंट कब करना था, करना अभी इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट विद इन 15 डेज, बट उसने 15 दिनों में पेमेंट नहीं किया और अक्टूबर 2018 में पेमेंट किया, जुलाई में सेल हुआ था, अक्टूबर पेमेंट हुआ और उसकी वजह से उसको इंटरेस्ट पे करना 11,000. सो whether this interest will be added, so answer is yes, this interest is also added because this interest is also covered here. यहाँ पे भी इंटरेस्ट का एक पॉइंट कवर किया गया है कि इफ इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर द लेट पेमेंट देन इट विल बी एडेड. So you can check the solution. Particulars amount rupees 25 tons of chemical rupees 80,000 per ton into 25, so 20 lakh. Freight add किया 3 lakh 12,000. Packing charges add किया 72,000. Weighing charges 30,000. Inspection charges, suppliers obligation made by recipient is 12,000. Cost of an instrument which is specially purchased by Z to manufacture this chemical is 1,10,000. Government subsidy will not be added because it is provided by the state government and which is not directly linked to the supply. Interest for late fees, यहाँ पे इंटरेस्ट भी आपको ऐड करना है बिकॉज यहाँ पे हमने इंटरेस्ट जो लेट फी का इंटरेस्ट था यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि इंटरेस्ट ऑन लेट फी विल बी एडेड. वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज 25,47,000. सो इस तरह से सारी वैल्यू को इंक्लूड करके आप ट्रांजेक्शन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. Now exclusions from transaction value, section 15 subsection 3 provides that the value of supply shall not be include any discount which is given below. कोई भी situation 1 discount which is allowed before or at the time of supply, this discount will not be issued in the value of taxable supply if it is duly recorded in the invoice which is issued in respect of such supply. यानी आपने ऐसा कोई भी डिस्काउंट जो सप्लाई करने से पहले या सप्लाई के टाइम पे दे दिया है तो उसको ऐड नहीं करने का. जैसे 10,000 का आपने गुड्स या सर्विस किसी को सप्लाई किया और उसको बोला कि 2,000 का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो दैट मींस नाउ जीएसटी विल बी levied on 8,000 not on 10,000 because it is pre-decided, it is given at the time or before the supply, so that is why it will not be added. Second type of discount is discount that is allowed after the supply has been affected. This discount will not be included in the value of taxable supply if the following two conditions are satisfied. Second discount is a discount which is given after the supply, but it is decided that this type of discount is given, then this type of discount is also not to be included while charging GST. But in that, two conditions should be satisfied. First one, such discount is given under an agreement entered into at or before the time of supply and specifically linked to the relevant invoices. आपने 5 लाख का गुड सप्लाई किया है और उसको ऐसा बोला है कि अगर आप
हमारे पास से 10 लाख का गुड्स परचेज करोगे, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। तो दैट मीन्स उसने जब 5 लाख का परचेज किया तब उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिला था, बट एग्रीमेंट हुआ था कि अगर आप 10 लाख तक का परचेज करोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा, दैट इज 10%। अब उसने नेक्स्ट 2 लाख का परचेज किया, टोटल 7 लाख हो गया। नेक्स्ट उसने 3 लाख का परचेज किया, अब उसका 10 लाख हो गया, दैट मीन्स नाउ 10 लाख इज done, target is achieved, now extra 10% discount is available. So that is why it is pre-decided into the contract. So this type of discount is also considered. So you have to now deduct 10 lakh minus 10%, that is 1 lakh. Now GST will be charged on line day. Input tax credit as is attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier has been reversed by the recipient of the supply. जितना भी परचेज किया था उस पे सबने आईटीसी ले लिया था, अब आपको रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी, क्योंकि एक्स्ट्रा आईटीसी नहीं ले सकते। अब डिस्काउंट लेना चाहते हो तो आपको आईटीसी भी जितना आपने अवेल कर दिया है वो उसने रिवर्स करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि आपने 10 लाख पे जीएसटी मान लो कि 18% लगता है तो 1,80,000। अब आपको गुड्स कितने में अवेलेबल हुआ है, 9 लाख में, तो 9 लाख का 18% कितना होगा, 1,62,000। whatever ITC you have availed it should be reverse। तो दैट मीन्स जो डिफरेंस है 18,000 का उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। सो ये सेकेंड पॉइंट में ऐसा डिस्काउंट दिया है जो एट द टाइम ऑफ सेल नहीं दिया जाता, बट उसको बाद में दिया जाता है, बट पहले ही एग्रीमेंट में उसको डिसाइड कर लिया था। ऐसी सिचुएशन में परचेस करते हो या आप टारगेट अचीव करते हो या इस मंथ में परचेस करते हो, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट किया हुआ है सप्लायर एंड रेसिपिएंट के बीच में जो प्री डिसाइडेड था, तो फिर ऐसे डिस्काउंट को एक्सक्लूड करने का। बट अगर वो प्री डिसाइडेड नहीं है, जैसे मान लो कि कोई ऐसा गुड्स है जो बिक नहीं रहा था, उसका प्राइस था 10 रुपीज पर पीस, बट वो बिक नहीं रहा था, तो रेसिपिएंट ने बोला कि ये गुड्स आपका बिक नहीं रहा, तो सप्लायर ने बोला चलो अब ऐसा करो कि आप ये 10 रुपीज का गुड्स जो मैं आपको बेच रहा हूँ वो मैं आपको 8 रुपीज में दूंगा। तो अब वो उसको 8 रुपीज में मिल रहा है, बट ये 10 रुपीज का गुड्स आपने 8 रुपीज में दिया है, तो इसका मतलब ये डिस्काउंट पहले से डिसाइडेड नहीं था, ये डिस्काउंट आपको माइनस नहीं करने का। अब आपको जीएसटी किस पे लगाने का, 10 रुपीज पे या 8 रुपीज पे, तो आंसर इज 10 रुपीज पे, क्योंकि ये जो दूसरा डिस्काउंट दिया वो पहले से डिसाइडेड नहीं था, इसलिए इस तरह का डिस्काउंट आपको माइनस नहीं करने का और टोटल प्राइस पे जीएसटी लगाने का। बट हाँ, अगर आपका डिस्काउंट पहले से डिसाइडेड है तो फिर आपको उसको माइनस करके जो भी वैल्यू आती है उस पर आपको चार्ज करने का है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। X Limited biscuit manufacturing company in Bhiwandi, Maharashtra, it generally gives a trade discount of 20% in the list price when goods are purchased by a distributor। याद रखना यहाँ पे लिस्ट प्राइस का मतलब होता है जिसमें डिस्काउंट आपने माइनस नहीं किया है। During December 2018, it offers Christmas bonanza, special Christmas discount of 10% is given on the list price of all the product to the distributor in addition to the normal discount of 20%। अब यहाँ पे सिचुएशन समझ लो कि नॉर्मली जो लिस्ट प्राइस है उस पर 20% डिस्काउंट सबको मिलता है, बट अगर यही गुड्स आपने दिसंबर में परचेस किया तो एक क्रिसमस बोनंजा वो एक्स्ट्रा का 10% मिलेगा। ये डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट है जो प्री डिसाइडेड है, इट इज इन द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज इन द एग्रीमेंट कि इफ यू परचेज इन दिसंबर देन you will get extra 10% Christmas bonanza discount. So both the discount will be deducted if it is purchased in December. A Limited, one of the distributors from Karnataka, purchased 1,000 packets of chocolate biscuits November 30, 2018, 2,000 packets for the same biscuit on December 1, 2018. Calculate the value of goods under GST Act. So here, two type of purchase on two different dates. 1,000 packets were purchased on November 30 and 2,000 packets were purchased on 1st December. So the purchase made in November, on that only one discount, that is 20% trade discount is available, whereas the purchase made on December 1, 2008, two types of discount are allowed. First one 20% and second one 10%. So let us check the solution so that you will get an idea. 1,000 packet of chocolate biscuit, 40 into 1000, that is 40,000, and second one 2000 into 40, that is 80,000. Now in first column, purchase of rupees 40,000, only 20% trade discount is allowed and Christmas bonanza discount was not allowed. Why? Because it is not purchased in December, whereas
On 80,000, two types of discount is allowed. First one, trade discount of 20% and 10% of Christmas bonanza discount. So 16,000 and 8,000, two discount is allowed. And why it is available? Because it is purchased in December and it is pre-decided into the agreement that if you purchase in December, then you will get extra 10% discount on list price. So that is why in second case he got two types of discount. That is first one, 20% trade discount and 10% Christmas bonanza discount. So taxable value of supply in first case is 32,000, that is 40,000 minus 8,000, 32,000, and in second case 80,000 minus 16,000 minus 8,000, that comes to 56,000. So this way you can calculate the taxable value of supply. So आपने ये वीडियो में हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई वो आपने सीखा है। इसी तरह से मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।